The way we are consuming the energy, we are generating the energy, it is going to change entirely. So what Waaree can do? We started with the solar, with the NL and other things. We are moving to the batteries, wind, some part we are moving there. Other items in the entire value chain where we are seeing recycle business, or it comes to the hydrogen, all the things we are doing today. So this businesses looks like so smaller today, but in my opinion, this will be much larger. Even the battery storage. Battery storage will be the much larger. Talking back to the numbers, the first line you asked, at 26 gigawatt, the capacity which we are putting, even if you take the today's average price of, lowest price of 2 crore rupees megawatt, only solar. I'm not talking about batteries or EPC or infrastructure, wherever we are investing. We keep that aside, all the business. The clear potential here is that 52,000 crore. Now, if I run that even at worst number of, let us say, 60 or 70%, Sure. we are talking about 35,000 crore potential of only solar panel. If all the capacities get operational end of this year, that capacity comes in the next year. And then all other businesses will help there. International expansions, that will also help us a lot here. And we are talking about 11,000-12,000 crore number to this number in this short span of time. I think हम लोग जब बचपन में स्कूल में 4th 5th स्टैंडर्ड के बाद घर नहीं जाते थे, हमारी किराने की छोटी दुकान थी और दुकान में जाते थे. हम सब गुजराती मारवाड़ी की वही स्टोरी है, तो कोई अलग स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल है. वहीं दुकान में गए, वहीं सीखा कि कितने में बेचना है, कैसे पैसे लेना है. 10th के बाद जब मुंबई आए तो वो तो क्लियर ही था कि नौकरी नहीं करनी है, कुछ खुद का करना है. और 12th के बाद फैमिली की ऐसी कोई बड़ी इनकम नहीं थी, तो हॉस्टल में रहते थे. तो ये हुआ कि अभी पैसे घर से नहीं लेने हैं, कॉलेज की फ़ीस भरनी है या खुद के लिए जो चाहिए, तो क्या कर सकते हैं. तो उस ज़माने में रेडियो पे कमेंट्री सुनने का बड़ा शौक़ सब लोगों को हुआ करता था. टीवी वगैरह उतने नहीं आए थे, तो 100 रुपये का रेडियो आया, 2 रुपये के ड्रॉस किए 100 लोगों के, और 100 पे 100 रुपये कमा लिया. और वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू होती है हॉस्टल से. देन हार्डवेयर ट्रेडिंग में आए. हार्डवेयर ट्रेडिंग से प्रेशर गेज थर्मामीटर फोकस बिजनेस में आए. मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, इंपोर्ट शुरू किया. बात कर रहा हूँ मैं 89 में हमने पहली फैक्ट्री लगा दी थी कि उन दिनों में किसी को थर्मामीटर या प्रेशर गेज चाहिए तो डिलीवरी के 6 से 8 महीने लगते थे. मैं कलकत्ता जाके बैठता था, खुद माल लेके आना पड़ता था. फैक्ट्री में पैसे देने के बाद आपको 8-10 दिन बैठो तो आपका माल बनता है. मटेरियल फिर आप बॉम्बे लेके आओ, बेचो. 89 में फैक्ट्री शुरू की थर्मामीटर्स की, वारी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से. इंपोर्ट शुरू किया. फिर कहा इसको इंडिया में क्यों नहीं बना सकते हैं, इंडिया में बनाना शुरू किया. एक्सपोर्ट शुरू हुआ 65 कंट्रीज़ में. इंडिया का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 55% उन प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने ले लिया था. वाओ. प्रोबेबली फ्रॉम 94 कंपनी हमने बेची 2011 में. Every year we were winning the highest exporter awards, EPC and all that. But 2007 में पहली बार मैंने सोलार को जर्मनी में हैम्बर्ग में देखा. 2007 में? साथ में हम तो सारी दुनिया में घूमते थे माल बेचने के लिए, एग्जीबिशन लगाने के लिए. इनका ये क्या चीज़ है, कैसे चलती है, क्या होता है. और हैम्बर्ग नॉर्थ जर्मनी में होने से वहाँ हार्डली 130 to 160 सनी डेज होते हैं. तो यार इंडिया में, गुजरात राजस्थान में तो 300 दिन से ज़्यादा होते हैं, तो क्यों इंडिया में नहीं चलेगा. तो प्राइस इशू था. उन दिनों में 400 रुपया वॉट का सोलर पैनल था, जो आज 15-17 रुपये की हम लोग बात कर रहे हैं. तो मैंने कहा मैं अगर इंडिया में इसको बनाऊं तो आप लोग लोगे. जर्मनी में कुछ लोगों से बात की, इटली में बात की. 2008 में इंडिया में पहली फैक्ट्री लगाई सोलार की और एक्सपोर्ट शुरू किया. तो ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि सोलार लाइमलाइट में आया लास्ट 4-5 सालों में, बट दुनिया में तो ये 30-35 साल से चल रहा है. इसी जो आपने सुना कि 2008 में हमने फैक्ट्री लगाई और अभी हम लोग बाहर आए हैं. रीज़न बहुत सिंपल है कि कैपेसिटी लगाना और नंबर्स लाना सोलार इंडस्ट्री में कम्प्लीटली डिफरेंट है. आज किसी के पास 10,000 करोड़ रुपया है तो वो कल कैपेसिटी लगा सकता है.
बट क्या बैंकर्स का अप्रूवल मिलेगा, क्या आपको थर्ड पार्टी अप्रूवल्स का परफॉर्मेंस 5 साल का 10 साल का अगर आपको ग्राउंड पे देना है आपके प्रोडक्ट का आप दोगे? क्योंकि बैंक्स, हमने अगले प्रेजेंटेशन में भी देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडिया में तो 70-75 की बात चलती है, बट इंडिया के बाहर ऑलमोस्ट 90 से 100% जो पैसा है वो बैंक्स देते हैं। तो आपको भी अगर किसी को 100% या 70% भी लोन देना है एज योर वेंचर, विल यू एक्सेप्ट द रॉ मटेरियल और द पैनल्स उन प्रोजेक्ट में जो 25 साल तक, क्योंकि ये लोन्स आपकी 15 से 18 साल की कम से कम होती है, विल यू एक्सेप्ट एज अ लेंडर कि मैंने कल फैक्ट्री लगा दी है और मेरी पैनल में आपको शायद बाहरी से 10% सस्ती दे रहा हूँ, आप उसको लैंड करोगे क्या? एंड दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन अ ग्लोबल मार्केट फॉर लास्ट 15 years. Bankers are coming with more and more norms. They are learning a lot. They are putting more and more consultants, certification, insurance. So putting a capacity is a one part and really getting the success is another part. And this we have seen in Indian history. Today, more than 12 companies when we started, and today they are not in business. And personally, I am seeing more and more companies coming in this league. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नॉर्मल पैनल पे हम लोग कहते हैं कि 250 पास्कल का लोड रख के चल जाएगा, वो कहते हैं 7500 पास्कल का लोड रखिए, उसके बाद का सर्टिफिकेट दीजिए, एंड देन वी विल गिव यू द इंश्योरेंस फॉर योर पैनल्स. So it's 5 years minimum journey to answer your question. If somebody wants to do what we have done with more than 45 certification today, it will be 7-8 years journey. Customers are becoming more and more educative. Failures are coming in the market, not in a big way, because they are trying to put it under carpet. But end of the day, I think the education of the customer, if I see 3 years back for even a rooftop of 3 kilowatt, and today, it has grown a lot, and I think it will continue to grow. So customer will start asking such questions. For example, in Gujarat, where rooftop was going on, customer was asking the questions which we never thought. End of the day, they have given us the largest market share there. 10 साल की मेहनत यूएस में, जो कोविड में एक साथ काम आ गई. At that time, we had small orders. But during the COVID, freight cost has increased a lot. And all the US business is the door delivery duty paid. They want, even if you can install for them, they're more than happy. Not only deliver to the port. One of the order, close to a $20 million was a loss. And at that time, company's balance sheet was not ready to take this loss. We decided to take that loss, not to go back to the customer and ask them the freight cost. $1,600 to $2,200 a container. Price has gone to the $24,000 container on door delivery. It was not only the ocean freight. The truck drivers in US were not available. Now, I'm sure you know this story in all many other businesses. We took that call, we delivered it to the customer, and that was like the only company globally in solar industry who has kept their promise, delivered on time at any cost. And 10 years certification coming in the list of the bank's white list. There is a company called PVEL. They published the third-party report of the panel performance. And that panel performance was always coming as a worry in a top list. So it was so many dots, and they all got together during the COVID. And then the customers started believing us more. They started fighting with their globally 97% market share with the China. So they start working on the alternative supply chain, and Waaree was ready for that. Hitesh bhai, you have said it many times, even publicly so, and this number prove. आप जहाँ पे खड़े रहते हो, you always think of 10x from there, right? अभी 10 हमारे इंटरनल मीटिंग्स का कुछ इन्फॉर्मेशन आता है आपके पास? नहीं, ये तो वो डेटा प्रूव कर रहा है. वो इसीलिए तो स्लाइड पहले दिखाया है क्वेश्चन पूछने के पहले कि पिछले कितने साल में 100x हो चुका है. एंड ऑफ कोर्स यू हैव दिस माइंडसेट not to think incrementally, but you are not thinking of 10-20% growth, but you are thinking of 10x. अभी वो तो होगा नहीं होगा परमात्मा डिसाइड करेगा. But where does that mindset of 10x comes in? नॉर्मली लोग रेजिस्टेंस शुरू होता है. मतलब हम लोग अभी बैटरीज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इंटरनली, मैं आपको लास्ट 2 वीक की स्टोरी बताता हूँ कि हमने बोर्ड से तो अप्रूवल अभी
2000 करोड़ का लिया है। तो मैं फैक्ट्री प्लांट में नॉर्मली बहुत रेगुलर विजिट करता हूँ, तो बैटरी की सिविल वर्क पे गया मैं, वहाँ काम चल रहा है। तो वहाँ पूरी टीम थी। मैंने कहा क्या करने वाले हैं अभी हम लोग? तो बोले सर हम 4 गीगावाट तक कर लेंगे। हम 20 के नीचे क्यों सोच रहे हो? तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, इसको बुलाया, तो बोले सर पहले इतना करते हैं फिर वो करेंगे। एंड 13 बिल्डिंग्स का टोटल प्लान है वो कॉम्प्लेक्स बनाने का। तो उन लोगों ने एक ही बिल्डिंग से शुरू किया, सर ये करते हैं, बाद में ये करते हैं, फिर वो बिल्डिंग बनाएंगे। तो मेरा पोते का नाम हरम है, तो मैंने कहा फैक्ट्री हरम के लिए तो नहीं बनानी है हमें। So these are the challenges. You have to sell lot inside. And in 1 week time, I think 3 days back I had a meeting and they told me कि सर एक्सेप्ट 1 बिल्डिंग, सारे बिल्डिंग का काम अभी एक साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। You have shown कि जहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, you have the ability and courage to do it. In your technology, in your R&D, you have one of the most sophisticated NABL lab. You invested in bearing losses in the short term to make long-term relationships with the customer. How did you think about investing when it's necessary? Because वन लाइनर नहीं है, 1 वर्ड है, गट फीलिंग। बट ऑफ कोर्स कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो सोचते हैं, कभी हम लोग काफ़ी बिजनेसेस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या है अगले 10 साल में ये कहाँ जाएगा। इंडिया में जब हमने सोलर शुरू किया तो ये गट फीलिंग तो बहुत क्लियर था कि आज नहीं तो कल इसको इंडिया में आना है। चैलेंज था प्राइस का, तो वहाँ एक गट फीलिंग ये आ जाता है कि प्राइस आज नहीं तो कल कम होंगे। 2007 में हम लोग सोलार में आए। आज कुछ इंडस्ट्रीज़ में हम लोग जहाँ जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ ये होता ही है कि इसको आज नहीं तो कल बड़ा होना है, और वहाँ फिर एक इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। एज अ कंपनी वी हैव बीन इन अ बिजनेस फाइटिंग 97 to 98% Chinese market share in India till last year. If you look to this year also, close to 40% still import is happening in the country from China. So Chinese competition was there the day one we came into the business, and it is still there. It has not gone. If China will go, maybe somebody will come. So competition will be always a part of the business. Maybe the Indian companies will come. I don't know which will be the larger company tomorrow, or maybe today the large corporations are coming in this business. They will be larger than us. So competition अगर नहीं है ना तो मज़ा नहीं है. So when I speak to our people, first of all, we should always thank to our competition. 2011 से नॉन-स्टॉप प्रॉफिट कर रहे हैं और चाइना के सामने ही कर रहे हैं, बट डिफ़िकल्ट बहुत है। जैसे आपने बताया कि जब भी मैं चाइना से आता हूँ, और हमने फैक्ट्री लगाई थी प्रेशर गेज की चाइना में, वाल्स की लगाई थी। जब हमने प्रेशर गेज की फैक्ट्री 2011 में बेची इंडिया में, तब मुझे नो कंपटीशन में वो बेचना पड़ा वहाँ की कंपनी को। तो चाइना का स्केल थिंकिंग बिजनेस के लिए इट इज़ लाइक अ आर्मी। द वे रिस्पेक्ट द आर्मी, द वे वी फैसिलिटेट द आर्मी, दे फैसिलिटेट the industries there. When we set up the factory in a small village, they have not given us the land free, but the 6 months salary of our 400 workers has been paid by the villagers. So it's completely different. And every time you go, you learn there more and more. You understand what they are doing to become a superpower of the world. Family background is, like we said, we were in a small village, less than 3,000 population. Income was 1,000 to 1,500 rupees a month, in talking about way back in 82, 84. And today it is a joint family of 27 people. It's all together. Mother, father, whatever the culture they have given to the next generation also. We have spent our more time in the office, and the children have spent more time with the grandfathers. Sure. So that culture has been there, and it is still there. And looking to them looks like it will continue. That we are just the medium. We are not doing something extraordinary. How they will take the business forward, we could fortunate again, all of them, that during the education also, even after 10th, they have started coming to the offices, all the vacations, whenever they get the time. So probably it's seeing and learning, and they're seeing how we are working, how many hours we are working,
So that is again what we learned from Sagar Bhai. Hunger and the hard working, that has gone to them also. And whatever the challenges we have given to them all the time, they have taken it. It was not like that, I don't like it, I don't want to do it. Normally आजकल के बच्चों में होता है, Papa, I don't like it. I will do this, I will not do that. When they have been trained also together in the another education system, there they get the different training than they get at the home.